Hello all, welcome to Mitra's IAS. Let's go on to our next reading comprehension question for today. So this is 2022 paper, set A, question number 31, and this is the core idea type of question. Okay, so basically from this passage, we have to filter the core idea and understand the passage really well to deal with the question. Okay, so this is a passage, quite a long passage I would say. और let's visit the question first. Okay, so ये question number 31 है. According to the passage, natural selection cannot anticipate future environments on the earth. Okay, according to passage, natural selection cannot anticipate future environments on the earth. Because ये सारे reasons दिए हुए हैं, इसमें से किस reasons की वजह से natural selection अपना future predict नहीं कर सकती है earth पे. Okay, और इधर कुछ codes हैं. So let's go to the passage again. And I would suggest like always you pause the video for 2 minutes, attempt the question and then get back. Okay, so let's read the passage. So the first line says natural selection. अगर आपको पहले से पता होना चाहिए या होगा कि natural selection डार्विनियन थ्योरी है. डार्विन लेके आए थे natural selection की थ्योरी. So ये कह रहा है कि natural selection cannot anticipate the future environments on the earth. नेचुरल सिलेक्शन जो है वो फ्यूचर में क्या होने वाला है अर्थ पे वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है. Therefore, the set of existing organisms, जो existing organisms हैं, can never be fully prepared for environmental catastrophes. आगे आने वाले environmental catastrophes के लिए fully prepared कभी नहीं हो सकती है. Okay, that awaits them. An outcome of this is the extinction of those species which cannot overcome environmental adversities. So इसका outcome क्या होगा कि वो species जो environmental adversities को overcome नहीं कर पा रही हैं वो क्या हो जाएंगी, extinct हो जाएंगी. Correct? This failure to survive in modern terms, can be attributed to the genomes which are unable to withstand geological vagaries and biological mishaps, infectious diseases and so on. So जो भी genomes, जो भी genes हैं, वो जो biological vagaries और geological vagaries और biological mishap को withstand नहीं कर पाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, extinct हो जाएंगी. This biological evolution on earth, in biological evolution on earth, extinction of species has been a major feature. कि हमें पहले से पता है कि extinction of species होता है और ये एक major feature है अर्थ पे. Correct? Let's move on. The earth may presently have up to 10 million species. अभी अर्थ पे 10 million species है. Yet more than 90% of species that have ever lived on earth are now extinct. तो ये कह रहा है कि more than 90% species जो हैं, जो हमारे अर्थ पे रह चुकी हैं, वो अब extinct हो चुकी हैं. Okay? Once again, the creationist doctrine. Okay, what is the creationist doctrine? Creationist doctrine is a theory that believes that there is a divine creator who creates and who destroys. Okay, so creationist doctrine failed to satisfactorily address why a divine creator was firstly bothered to create millions of species and then allow them to perish. तो क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन भी ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि क्यों कोई क्रिएटर क्रिएट करेगा मिलियंस ऑफ स्पीशीज एंड देन अलाउ देम टू पेरिश. But the Darwinian explanation for extinct life is one again simple, elegant and convincing. Darwinian का जो explanation है, Darwinian explanation, वो simple है, elegant है और convincing है. Organism वो extinct as a function of environment और biological assault. So Darwin कहता है कि species extinct होती हैं environmental और biological assault की वजह से. Assault word का मतलब होता है physical attack. सो अगर उसको एनवायरमेंटल अटैक होगा या बायोलॉजिकल अटैक होगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. फॉर विच द इनहेरिटेंस डीम्स देम इल इक्विप्ड. उनके जो इनहेरिटेंस है, जो जीन्स है उनके, वो इल इक्विप्ड हैं इस अटैक को लेने के लिए. Therefore, so-called Darwinian theory of evolution is not a theory at all. Now, this is a little confusing. Okay, यहाँ ऑथर का ये कहना है कि डार्विन की जो थ्योरी है, इट्स नॉट अ थ्योरी एट ऑल, इट्स अ फैक्ट.
he means to say that हम इससे imply ये करेंगे कि it's a fact, it's not a theory at all, क्योंकि आगे का sentence ये कह रहा है कि evolution happens and this is a fact. Okay, Darwinian theory of evolution is not a theory at all. Evolution happens and it is a fact. Okay, let's read further. The mechanism of evolution. Darwin proposed natural selection. ये आपको यहाँ पे information दे रहा है कि डार्विन की थ्योरी है ये natural selection की. The mechanism of evolution is amply supported by scientific data. Evolution होता है, इसके लिए बहुत सारा scientific data available है. Indeed, to date, no single zoological, botanical, geological, paleontological, genetic or physical evidence has refuted either of the central two Darwinian ideas. अब ये कह रहा है कि evolution होता ही है, इसके लिए हमारे पास ample scientific data है और इन सारे साइंसेज में जूलॉजिकल, बोटानिकल, जियोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल, जेनेटिक में कहीं भी कोई एविडेंस नहीं है जो डार्विन की दो मेन थ्योरीज को रिफ्यूट कर सके. दो मेन थ्योरीज क्या थी? कि नेचुरल सिलेक्शन एंटिसिपेट नहीं कर सकता है फ्यूचर को, और दूसरा था कि आप जो भी इल इक्विप्ड हैं वो एक्सटिंक्ट होंगे. सो दीज वर द टू मेन थ्योरीज. इफ रिलीजन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, अगर हम लोग रिलीजन को इग्नोर करें, so Darwinian laws are acceptable just like the laws proposed by Copernicus, Galileo, Newton and Einstein. Set of natural laws that explain natural phenomena in the universe. So you must be already aware कि ये सारे कौन हैं? ये physicist हैं. So author का कहना है कि अगर हम religion को consideration में नहीं लें तो डार्विन की जो थ्योरी है it is as authentic as the theory proposed by these physicists. Okay, so this was the passage. Let's go to the question again. Question says, according to natural selection, according to the passage, natural selection cannot anticipate future environments on earth because species not fully prepared to face environmental changes that await them will face extinction. So this was mentioned in the passage. Let's go back and see. In the first page, see, organisms cannot be fully prepared for environmental catastrophes. Okay, so by this we can say that first statement is correct. Species not fully prepared to face environmental changes await them will go extinct. Okay, second one says all, it's an important word, all the existing species would get extinct as their genomes will not withstand biological mishap. Will all species get extinct? No, right? Some of them will survive, some of the genomes will survive. So obviously this is wrong. एक तो extreme है, ऊपर से हम उसका मतलब भी समझ पा रहे हैं that all ऐसा नहीं होगा कि कोई भी genome नहीं withstand कर पाएगा. Let's see the third one. Inability of genomes to withstand environmental changes would result in extinction. Now this one is also directly written in the passage. Let's go and check. Here in the first page. Okay, yeah. Attributed to genomes which are unable to withstand geological vagaries and biological mishaps will face extinction. So going by that, our third statement is also correct. Okay, and the fourth one says extinction of species is a common feature. So वहाँ पे last में एक sentence दिया हुआ था कि extinction होता है और it's a fact. So look here, extinction of species has been a major feature. ये एक major feature अर्थ का है, यही बोला जा रहा है fourth statement में. Right, so going by that, fourth is also correct. So let's look at the codes. So it's C 1, 3 and 4. Now I would like to tell you कि अगर आप if you're going by elimination, core idea पकड़ना इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए. Though if you understand the passage very carefully, you will be able to catch what is the core idea. But it is good to go by elimination. Okay, elimination से अगर आप जाइएगा तो आप देखिए कि as soon as you know कि number 2 is wrong, you will know which is your answer. Okay, so it's an easier way to opt. Now, as we already discussed, is a core idea type of question. Okay, you need to understand what the author actually wants to say. Elimination technique से हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं आंसर तक.
एनवायरनमेंट एरिया से क्वेश्चन था. नाउ लुक एट द टफ वर्ड्स. ओके. The keywords in the passage: natural selection. Natural selection, survival of the fittest. जो भी नेचर उसी को चूज करेगा जो फिटेस्ट है उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए. एंटिसिपेट करना, अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना. एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ्स, मेजर नेचुरल डिजास्टर्स, बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स जो बहुत ज्यादा हार्म कॉज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ्स. एक्सटिंक्शन, कंप्लीट स्पीशी डिसअपियरेंस, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड, जो स्पीशीज पूरी खत्म हो जाती है अर्थ पे से, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन. जीनोम्स, जीन्स, ओके, जेनेटिक जो आपका बिल्ट होता है वो. जियोलॉजिकल वेगरीज, अनप्रिडिक्टेबल अर्थ चेंजेस, अर्थ में ऐसे चेंजेस जो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल वेगरीज. बायोलॉजिकल मिसहैप्स, unexpected biological problems will be called biological mishaps. Biological evolution, species that change over time. अब जैसे बोला जाता है कि मंकी से इवॉल्व होके इंसान बना है, तो दैट इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, कैसे वो धीरे धीरे चेंज हुआ ओवर टाइम. Creationist doctrine, as we already discussed, the belief in the divine creator. Okay, and divine creator, who is the divine creator? It's the God. um, Zoological, it's the study related to animals. Botanical, plant study. Geological, related to Earth's history. Paleontological, related to fossils. जेनेटिक, रिलेटेड टू जीन्स, आपकी जीन्स हेरिडिटी जो आपकी है वो जेनेटिक है. एंड नेचुरल लॉज, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, जो नेचर के लॉज हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल लॉज. So this was it for the passage. Thank you. Let's meet with the next PYQ tomorrow.